बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और मैं हूँ आपका मेज़बान एहतशाम अरशद निज़ामी। नाज़रीन, रमज़ान के आखिरी अशरे में हम दाखिल हो चुके हैं, और ये आपको पता है कि वैसे तो रमज़ान हमारा बाबरकत महीना है, अल्लाह का महीना है। और ये हम दुनिया में जहाँ भी मुसलमान हैं वो कोशिश ये करते हैं कि इस महीने को ज़्यादा अच्छे अंदाज से, अफजल अंदाज से इसको मनाएं, और इस महीने से हम सबक सीखें और हम अपनी ज़िंदगी को उन्हीं रास्तों पर डालने की कोशिश करें जिसको अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुंतखब किया है या मुकर्रर किया है। तो और ये कई आपको पता है कि इसमें 3 अशरे होते हैं, पहला अशरा, दूसरा अशरा और ये तीसरा अशरा जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं। और यकीनन हम आपको अपने प्रोग्राम हम और आप में मुबारकबाद भी देते हैं रमज़ान की। निज़ामी एकेडमी जिसके तहत ये प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम हम आपको रमज़ान की मुबारकबाद देते हैं। और आज हम इसी मौजू पर प्रोग्राम कर रहे हैं, और हमारे साथ 2 मेहमान हैं। हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं इसमें अब मैं आपका भी मुलाकात करवाता हूं उनकी। हमारे साथ गेस्ट स्पीकर हैं मुनीब बेग साहब। ये स्कॉलर हैं और इन्होंने यंग स्कॉलर हैं, और आज हमारे जो यंग व्यूअर्स हैं उनको बहुत खुशी होगी कि वो बातें जो नहीं समझ पाते आम तौर पर इस्लाम के बारे में, वो आज ज़रूर बहुत सी बातों को सीख सकेंगे। और जितने व्यूअर्स हमारे हैं, अगर उनका कोई सवाल हो रमज़ान के आखिरी अशरे के हवाले से या ज़कात की अदायगी के हवाले से, तो वो ज़रूर करें। हम उसको स्क्रीन पे भी लाएंगे, अपने कमेंट्स में कीजिए, और हम अपने मेहमान से ज़रूर उनसे पूछेंगे भी। तो आइए हम आपसे सबसे पहले मुलाकात करवाते हैं अपने मेहमानों की। हमारे साथ आप देख रहे होंगे मुनीब बेग साहब। मुनीब बेग साहब आईटी मेजर है इनका। ये फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन्होंने बीएस किया है, और इन्होंने ये नाउ ही इज वर्किंग फॉर अमेज़न इन आईटी डिपार्टमेंट। और ये अपना बीएस कंप्लीट करने के बाद इन्होंने 6 साल दारुल उलूम कोरंगी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के तहत जो चलता है उसमें इन्होंने आलिम का कोर्स किया है। और इनके बारे में कहा यह जाता है कि गार्डन ग्रोव की मस्जिद में जो तरावी पढ़ाना शुरू किया, ये हाफिज भी हैं, तो उन्होंने वहाँ 13 साल की उम्र से वो तरावी पढ़ाना शुरू किया है। तो और ये माशाल्लाह स्कॉलर हैं, यंग स्कॉलर हैं। और हमारे दूसरे मेहमान हैं तारिक मलहांस साहब। तारिक मलहांस साहब शिकागो से हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया मुनीब बेग साहब कैलिफोर्निया गार्डन ग्रोव से हैं। तारिक मलहांस साहब साबिक कंट्रोलर हैं सिटी ऑफ शिकागो के, और ये पहले मुसलमान हैं जो कंट्रोलर मुकर्रर हुए, और उन्होंने सिटी ऑफ शिकागो का बजट बनाया और उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया, और इनका एक नाम है सिटी ऑफ शिकागो में। और ये कुक काउंटी जो अमेरिका की सबसे बड़ी काउंटी है उसके सीएफओ भी रहे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी रहे, और ये प्रेसिडेंट भी रहे मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर ऑफ शिकागो के, उसके बानियों में से हैं, और अभी भी उसके बोर्ड में हैं और काम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से भी इनका ताल्लुक है, फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी से, जो अमेरिका में और ख़ास करके बांग्लादेश के कैंप्स में जो लोग रहते हैं उनके लिए ये
में भलाई के काम करते हैं, और अमेरिका में जो होमलेस शेल्टरलेस लोग हैं उनके लिए भी काम करते हैं, और अभी पाकिस्तान में जो सैलाब आया और टर्की में जो ज़लज़ला आया तुर्किया में, वहाँ भी ये काम कर रहे हैं। तो हमारे तीसरे मेहमान अभी आए नहीं हैं, वो भी आ जाएंगे। वो भी एक ह्यूमैनिटेरियन है, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम कैलिफोर्निया, एजाज बल्खी साहब। वो फैमिली मुस्लिम यूएसए के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और वो पाकिस्तान में भी और यहाँ अमेरिका में भी जो महाजरीन आते हैं सीरिया से, अफ़गानिस्तान से, उनके पास ज़राए नहीं होते हैं, उनको कफन दफन के उनके ज़राए नहीं होते हैं, तो वो सारा कुछ ये काम करते हैं। तो आज हम उन लोगों के साथ आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं खुश आमदीद कहूँगा मुनीब बेग साहब को। मुनीब बेग साहब, आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। वेलकम टू प्रोग्राम। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मुनीब बेग साहब, मैं पहले आपसे सवाल करूंगा, और ये चूंकि ये एक जो प्रोग्राम हमारा है, ये फैमिली टाइप प्रोग्राम है, इसमें व्यूअर्स भी हमारे होते हैं जो मुस्तकिल होते हैं, और जो मेहमान होते हैं वो भी आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले मुनीब बेग साहब हमें ये बताइए कि रमज़ान के आखिरी अशरे की अहमियत क्या है, फिर हम चलेंगे ज़कात की तरफ, फिर हम तारिक मलहान साहब से भी उनकी बात करेंगे। जी जी ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन. Inshallah, I'll be speaking in English, but I'm happy to answer questions in Urdu as well. श्योर। So first off, I want to express my gratitude and thanks for our dear host, Brother Ihtisham Saab, for organizing this program and asking me to be a part of it. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our time that we spend together and make it beneficial for all of us, inshallah. With regards to the question about the last 10 days and nights of Ramadan, so we know that Ramadan is a very special time, a very blessed time, a time where Allah subhanahu wa ta'ala opens tremendous blessings on the Ummah, on the Muslims. Those that observe Ramadan, that fast in Ramadan, that stand up at night and perform salah in Ramadan, the rewards are multiplied. The gates of Jannah are open, the gates of Jahannam are closed, and there's a lot of incentive to do good. And Allah subhanahu wa ta'ala makes that time easier for us to do good things. And what we see is that when we get this tremendous blessing from Allah subhanahu wa ta'ala, then there is so much opportunity to be grateful for that blessing, to have that shukr in for that blessing. And if we want to look at the example of our role model, Rasul sallallahu alaihi wasallam, as to how he interacted with Ramadan and how he received Ramadan and how he modeled how we should behave in Ramadan, then we see in his his wife, our mother Aisha radhiallahu anha, describes that كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. That when the last 10 would enter, the last ashara would enter, the Prophet صلى الله عليه وسلم would stand up, would awaken the night, أحيا الليل, he would make the night alive, وأيقظ أهله, and he would wake up his family, and he would strive, and وشد المئزر, and that literally means like he would tighten his belt. And it's like, when you say in English, like roll up your sleeves, like he would get to work. And there's several reasons why the Prophet ﷺ would do this. One is that the month of Ramadan is now coming to a close, and we've had 2 weeks, two periods of 10 days, 20 days of Ramadan have gone by, and now we're approaching the final ending portion of Ramadan. And just like an analogy, when a person is in a race, at the end of the race, the runners now put in all of their energy. They put in all of their, whatever they have left, to try to make it to the finish line and do it in a better time than others. So this is that same analogy we should be thinking about as we're going through these last few days of Ramadan. That I may have
not been able to do everything that I wanted to do in the first portion of Ramadan. But these last few moments that are going by, now I want to make sure that I take as much advantage of these as I can. And as just like a runner would pick up pace at the end, I also want to pick up pace and maximize the rewards and opportunities that Allah subhanahu wa ta'ala is giving me. The other thing, and that is also very, very important, is that these last 10 days and nights also contain Laylatul Qadr amongst them. And as we know, Laylatul Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala describes in the Quran, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. That the night of Qadr is better than the worship of 1,000 months. So one of these nights, Allah subhanahu wa ta'ala has kept that knowledge hidden, has kept that secret. And the point there is that we need to seek it. If we knew which night it was, we would only worship that one night and we would neglect the other nights. So Allah subhanahu wa ta'ala kept it hidden so that we strive on each night, that we strive to get to have been amongst those that worshipped Allah subhanahu wa ta'ala on the night of Qadr. And then if we do that striving, then inshallah we will be able to receive that blessing and receive that reward of having worshipped Allah subhanahu wa ta'ala for on Laylatul Qadr, which would mean that our rewards on that night are multiplied by the worship of 1,000 months. So that is why the Prophet ﷺ, he told us in many ahadith the importance of Laylatul Qadr. Man qama Laylatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. That a person who stands up in night and worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, reciting Quran, making dua, doing dhikr, giving in charity, whatever it may be, they do that with iman, with faith in Allah subhanahu wa ta'ala, and seeking the reward from Allah subhanahu wa ta'ala, then their previous sins will all be forgiven. And he also said, فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم من حرم خيرها فقد حرم. That in these last 10 nights, there is a night that is better than 1,000 months. And whoever is deprived of its goodness is utterly deprived, is totally deprived. And Rasulullah ﷺ is rahmatul lil alameen, his mercy for the worlds. He has so much love and mercy for his ummah. But he also points out that if a person is negligent with regards to this, then they're really, really missing out on a great opportunity. So these last 10 nights in another hadith are mentioned as Aidkum min an-nar. These are the nights in which Allah subhanahu wa ta'ala frees many people from Jahannam. And we want to be amongst those that Allah subhanahu wa ta'ala looks at and says, this person is doing their best. This person is doing a good job. This person is trying. And because of that, I have included them amongst those who will be freed from Jahannam. So this is part of why we want to strive and exert as much as we can on these last 10 days and nights of Ramadan. And Aisha radhiyallahu anha, जी, मैं आपसे एक बीच में सवाल करूंगा आपसे कि ये जो आपने फरमाया है और आपने ख़ास तौर से जो वर्ड यूज़ किया है नाइट्स, तो उसमें कोई स्पेसिफिक है नाइट्स के हवाले से कि जैसे कि कहते हैं कि 27th नाइट वो बहुत ज़्यादा मस्जिदों में भी हमारे यहाँ रश होता है एंड लोग इबादत के लिए भी बहुत ज़्यादा सारी रात जागते हैं, लेकिन 21st नाइट, 23rd नाइट, 25th नाइट को वो एहतमाम नहीं होता है. तो क्या 27th नाइट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा अफजल है? What will you say? हाँ, तो इसके बारे में I would say that generally there is a perception in the community that the 27th night is the night of Qadr. And there are opinions that we find amongst the scholars of the past that held that 27th night is the night of Qadr. But the strongest opinion is that the specific night is not disclosed. That Allah subhanahu wa ta'ala has left that open, and it can vary from year to year. So if because there are descriptions of the night, that it is a very peaceful night, that it is a very calm night, that it is a very mild night. There's different descriptions, and a person who's attuned to that might sense that tonight feels like the night of Qadr.
that doesn't mean that same night will be the same Laylatul Qadr the following year. It can vary, it can change. So Allah subhanahu wa ta'ala chooses a night that will be Laylatul Qadr and every year, and it is only in the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala that He left it, He did not disclose it to anybody, but it is for us to seek it out. Now, generally, because the common perception of the 27th night, that's why we see most people, the masjids are the most packed on the 27th night, but that is really not the way we should be approaching this. We should be trying every single night, especially the odd nights, because there are hadith that mention that seek it out in the odd nights. But in general, all of these nights are very special. And that's also another common misperception that, the nights of Ramadan, I'm only going to worship on the odd nights. A person should try to do as much as they can. At the minimum, make sure that you're performing Isha and Fajr with Jama'ah. At the minimum. Because if a person, work obligations, something, they're just unable to do anything beyond that. Even if a person does Isha and Fajr, the hadith mentions that a person does both of them in congregation, they get the reward of standing up the whole night. So at the minimum, a person should not be negligent of that. And then add on whatever a person is able to. ओके मुनीब साहब, आपसे मैं अभी नाजरीन को बताता चलूं कि आज का प्रोग्राम हमारा आखिरी अशरे रमज़ान के ऊपर है, और मुनीब बेग साहब जो है वो यंग मुस्लिम स्कॉलर हैं, कैलिफोर्निया से हैं. ही वाज बोर्न एंड रेज्ड इन यूएसए, तो इसीलिए इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी हैं, और आज हमारे यंग जनरेशन जो है वो खुश होगा इनकी बातें सुन के, इसलिए कि वो हमारी बातें कम, हमारे एज के जो लोग होते हैं उनकी बातें उनकी समझ में कम आती हैं. लेकिन मुनीब बेग साहब आईटी मेजर है इनका, एंड ही इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, नाउ वर्किंग फॉर अमेजॉन इन आईटी डिपार्टमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं ये. और अपना तालीम करने के बाद ये दारुल उलूम कोरंगी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के अंडर में इन्होंने आलिम का कोर्स किया है. 6 साल वहाँ रहे हैं, और 13 साल की उम्र से इन्होंने तरावी पढ़ाना शुरू किया, और ये लेक्चर भी देते हैं इस्लाम पे. और आज हम आपके सामने उनसे सुन रहे हैं, और आपसे गुजारिश ये है नाजरीन कि इस प्रोग्राम को अभी से आप शेयर करना शुरू कीजिए, इसलिए कि बहुत बरकत वाला प्रोग्राम है, बहुत मालूमाती प्रोग्राम है, और आप इसको सुनेंगे, आप देखेंगे. और दूसरे, जब कोई कमेंट्स करें आप या सवाल करें तो अपना नाम ज़रूर लिख लीजिएगा, इससे कि सम टेक्निकल एरर है ये फेसबुक में ख़ास तौर से कि बाज़ औक़ात लोगों के नाम नहीं बताता है, फेसबुक यूज़र कर देता है. मैं भी मुनीब बेग साहब बताएंगे कि ये क्यों ऐसा होता है. आई डोंट नो, आई एम लेमैन इन आईटी. एनीवे, तो हमारे दूसरे मेहमान हैं तारिक मलहांस साहब. ये एक्स कंट्रोलर सिटी ऑफ शिकागो हैं, शिकागो का बजट बनाते रहे हैं, और शिकागो शहर जो है वो कई एक मुल्कों से भी बड़ा उसका बजट होता है शिकागो का. और ये मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर शिकागो के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं. फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी के तहत ये बहुत काम करते हैं, बांग्लादेश कैंप्स में भी गए हैं ये यहाँ से. तो आज मेरे साथ ये ह्यूमैनिटेरियन भी हैं. एक और मेहमान हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, एजाज बल्खी साहब, और वो फैमिली रिलीफ यूएसए के लिए काम करते हैं, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया है मुस्तहिकीन के लिए, गरीबों के लिए और नादारों के लिए. तो चलते हैं, हम दूसरा मसला हम पूछेंगे मुनीब साहब से ज़कात के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बात करता चलूँ तारिक मलहांस साहब से. तारिक मलहांस साहब, अपना माइक आप अनम्यूट कर दीजिए, और आपसे मैं ये पूछूंगा कि ये बताइए कि ये जो चैरिटी का काम आपने शुरू किया है ये कब से शुरू किया, और ये जो फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी है इसका जो वर्किंग ज्यूरिसडिक्शन है वो किधर किधर है, मुख्तसरन बताइए. तो फिर मैं मुनीब बेग साहब से ज़कात के बारे में सवाल करूंगा, और फिर आपके पास दोबारा आऊँगा. जी शुक्रिया एहतियाम भाई. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद. फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी ये एक्चुअली एहतियाम साहब का मरहूम मिन्नत है. तो ये ही बांग्लादेश में पैदा हुए, ईस्ट पाकिस्तान था, तो ये इन्होंने माइग्रेट किया फ्रॉम बांग्लादेश से कराची और अपनी मूवमेंट जारी की.
یہاں آ گئے تو پھر ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ کچھ ہمارے پاکستانی کہیں، لوگ ان کو بہاری بھی کہتے ہیں، ہم اسٹرینڈڈ پاکستانی بھی کہتے ہیں، تو جو پاکستان نہ آ سکے 1971 کے بعد، بہت سے لوگ آ گئے لیکن کچھ لوگ رہ گئے، وہ تقریباً 250,000 کے نزدیک ہیں، جو بڑی بری حالت کیمپوں میں مختلف جگہ پہ 66 کیمپ میں وہاں رہ رہے ہیں۔ تو یہاں وہ شام بھائی سے اور کچھ اور دوستوں سے ایسے مل کے باتیں ہوتی تھی کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے، ان کو یہاں بلایا جائے، پاکستان آئے کیا۔ تو یہاں ایک چھوٹی آرگنائزیشن ہمارے پاس تھی بھی نہیں اس وقت، لیکن باتیں ہوتی تھیں تو کہ بھئی ہم یہاں کس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں امریکہ میں کہ بھی اتنی مائگریشن کی جائے بنگلہ دیش سے یہاں پہ۔ تو ایونچولی ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بہتر ہے جب تک ان کا کچھ آنے کا بندوبست ہو یا نہ ہو تو کم از کم ان کے لیے ہم کچھ ایسے مواقع پرووائڈ کریں کہ ایٹ لیسٹ دے کین بی ویل آف۔ تو پھر ہم وی ایگریڈ کہ وی شوڈ اسٹارٹ ایٹ لیسٹ اسکولنگ ایجوکیشن۔ So there's the time about 15 years ago, ہم لوگوں نے we registered an organization called Friends of Humanity. اور جیسا کہ مولانا منیب نے ابھی بتایا زکوٰۃ کا، تو آپ کی زکوٰۃ سے اور ڈونیشن سے ہی یہ آرگنائزیشن چل رہی ہے۔ تو I really am thankful to all the donors across the country جو ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو ہم نے پھر 2014 میں ایجوکیشن کے لیے ہم نے ایک پرائمری اسکول کھولا، جو کہ اس وقت ہمارے پاس 6 اسکول ہیں، کمپیوٹر سینٹر ہیں، ہم نے ہائی اسکول بھی کھول دیا ہے، تو اب ہماری پہلی کلاس 10th گریڈ تک پہنچ گئی ہے۔ تو ماشاءاللہ ہمارے پاس 1200 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں، جن کے لیے وہ تقریباً 40 ٹیچرز ہیں۔ تو مین فنکشن فرینڈز آف ہیومینٹی کا جو ہے مین، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کی بچوں کی ایجوکیشن ہو، تو ہوپفلی دے ول کم آؤٹ آف سم اسکالرز، سم ایجوکیٹڈ، کیونکہ اس وقت ان کے پاس نہ تو بنگلہ دیش کی شہریت ہے، they are not citizens, they are not considered citizens, they don't have the passport, they cannot travel. Life is miserable because I have visited there. You can't explain the situation they are living in. Like 10 by 10 little tent, you might have 10 people living in that one. The beds are over top of each other. It's unbearable. That's all I can tell you. It's unbearable. طارق ملحان صاحب، آپ سے ایک میں سوال کروں گا، بیچ میں سوال کرتا جاؤں گا اس لیے کہ ٹائم کم ہوگا، اور منیب صاحب سے بھی میں نے کم ٹائم لیا ہوا ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا، بتایا ہمارے ناظرین کو کہ آپ نے پرائمری اسکولس بھی کھولے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور ہائی اسکول بھی کھولا ہے جس میں آپ 10th گریڈ میں اسٹوڈنٹس پہنچ چکے ہیں۔ تو آپ کا کیا کوئی پلان ہے کہ 10th گریڈ کے بعد ان کو آپ چھوڑ دیں گے؟ 10th گریڈ کے بعد تو کوئی اس کی کوئی پروفیشنل کنڈیشن پوزیشن نہیں ہوگی، تو کیا کوئی ووکیشنل ٹریننگ کا آپ کا پلان ہے کہ ان کو انگیج رکھنا یا ان کو کنٹینیو کرانا تاکہ وہ کچھ ارن کریں، کچھ اپنے آپ کو کیمپ سے نکالنے کی کوشش کریں؟ کچھ ہے پلان ایف او ایچ کا؟ پلان تو ریئلی ڈیولپ ہوگا، کیونکہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کتنا کالج تک افورڈ کر سکتے ہیں، ڈیپینڈز آن دی ڈونیشنز۔ اوکے، ہماری تو پلان یہ ہے کہ وہ اچھے اسکولوں میں چلے جائیں، لیکن جو ہمارے یہ بھی اطلاع ہے کہ گورنمنٹ بھی کچھ آفٹر سرٹن اسٹیجز دی گورنمنٹ ہیلپس. So let us see how many students we can send to the colleges. Maybe some of them might just start working, at least they will be better educated worker. So really it's a big plan, کیونکہ ایجوکیشن کے علاوہ ہمارے پاس بھی کچھ دوسرے پلان ہیں، ہماری کنسنٹریشن اس سے بھی ہو جاتی ہے. ایکسکیوز می جی، کیونکہ ان ایڈیشن ٹو ایجوکیشن وہاں ہم نے ٹیوب ویل لگائے ہیں، پانی کا بندوبست ہے، ہینڈ پمپس لگوائے ہوئے ہیں، ٹوائلٹس کا مسئلہ ہے، فوڈ ڈسٹریبیوشن ہے، بلکہ آج کل سے ہماری فوڈ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے. پوری جتنے بھی بچے ہیں 1200 ان کی فیملیز کو، وہ ایوری فیملی گیس 15-20 دن کا راشن ان کو دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے، میں ابھی چلوں گا، آپ سے دوبارہ بات کروں گا، آؤں گا، اور میں ابھی چلتا ہوں ذرا منیب صاحب کی طرف. لیکن اس سے پہلے میں اپنے ناظرین کو دکھا دیتا ہوں
कि फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी क्या स्टैंड्स करती है और क्या काम करती है। और आई एम होपिंग कि हमारे दूसरे मेहमान एजाज बल्खी साहब भी आ जाएंगे। तो बस ये एक थोड़ा सा एक चंद सेकंड का मैं ये दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं मुनीब बेग साहब की तरफ चलूंगा। Friends of Humanity is a not-for-profit organization working towards the betterment of stranded Pakistanis in Bangladesh. FOH built a computer learning center, primary and high school, with over 925 plus students with free uniforms and school supplies. We installed electric deep tube wells, hand pumps, and constructed toilets to provide clean water and sanitation. We're partnering with EDHI Foundation and Med Global to aid flood victims in Pakistan and those impacted by earthquakes in Syria and Turkey. Support our mission by donating generously at www.fohamerica.com. Sham bhai, I just want to correction ke ye jo 965 student hai, actually this is a number from last year that I think the video banaya to unhone change nahi kiya, but now it's over 1200. अच्छा, I just want to clarify. ठीक है। मैं चलूंगा मुनीब बेग साहब की तरफ। मुनीब बेग साहब, जो टाइम मैंने आपसे लिया था उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन बात बहुत अच्छी हो रही है और लोग उससे लर्न कर रहे हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू एक्सटेंड योर टाइमिंग लिटिल बिट मोर। और मैं आपसे पूछूंगा, जब ज़कात की बात चल निकली है तो ज़कात के बारे में मुनीब साहब, बहुत से लोग, हमारी कम्युनिटी के लोग, ख़ास तौर से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बहुत से लोग ज़कात की अहमियत को ऐसा समझते नहीं है। इम्पोर्टेंस क्या है ज़कात की, और ज़कात है क्या? क्या ये बस ऐसी चैरिटी है कि जो जी में चाहा 100 रुपया या 200 रुपया या 10,000 रुपया, जो अपनी हैसियत है उसके मुताबिक दे दिया किसी को और बांट दिया जाके, वो जो मस्जिद से निकलते हैं फ़कीर बैठे होते हैं, ज़कात के पैसे उनको देते चले गए। व्हाट इज़ ज़कात? कैन यू टेल अस कि वी कैन नो अबाउट द डेप्थ ऑफ द ज़कात, प्लीज। जी, Bismillahirrahmanirrahim. The zakat is a fundamental pillar of our deen of Islam. Just like we have the shahada, we have salah, and we have zakat. And zakat is one of the pillars of Islam. There are multiple ways of giving charity in Islam. So give in general, Allah subhanahu wa ta'ala describes in the Quran in many places, فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, that perform prayer, establish prayer, and give zakat. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, that the believers are those that establish salah and they give zakat. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, and they spend from what we have given them. And when it comes to charity, there are two categories. There are sadaqat or zakat that is obligatory, that is fard, that is required to be paid, that is a fundamental part of a Muslim. Just like when it comes to prayers, there are 5 daily prayers that are fard, and they have specific rules. You pray 2 rak'ahs in Fajr, you pray 4 rak'ahs in Dhuhr. You cannot say that I will pray however many rak'ahs I want for Dhuhr and I'll just count that as my Dhuhr. You know, I'll pray 2 rak'ahs today and that's just my Dhuhr. You have to pray the set amount of rak'ahs. And then there are nafli salat, that you can pray extra nawafil and you can pray as much as you want. And all of that is additional bonus, additional credit. So when it comes to charity, there's also that same concept. There are certain acts of charity that are obligatory, that are required. And they have specific rules as to how the zakat has to be calculated. How much, when does a person become responsible for giving that zakat? And then how much has to be given? And then to whom that zakat can be given? And all of these rules are specified. They come from the Quran, they come from the hadith of the Prophet ﷺ, and they are laid out in great detail in the books of fiqh. And then there are the extra voluntary acts of charity, where a person can give whatever they feel like to whomsoever they feel like, giving it with the intention of getting reward from Allah subhanahu wa ta'ala. So the distinction between zakat and other charity is that zakat is a fard action, is an obligatory action that has specific rules as to how it's calculated, whom it's given to, and upon whom it's obligatory. Now, when it comes to zakat, Allah subhanahu wa ta'ala describes not only the rules, but also shapes our mindset with regards to spending in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. And that's something also to keep in our minds, and that shapes how we approach this. That this is something that we're doing
primarily because it is my own personal need. I see that there are poor people. I see that there are needy people. But I'm not giving them as a favor to them. I'm giving it to them because this is my own need that I need to give in the path of Allah subhanahu wa ta'ala to get the reward from Allah subhanahu wa ta'ala, to get the benefits from Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala describes in the Quran, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَتُزَكِّيهِم بِهَا. That telling the Prophet ﷺ that take from their wealth some sadaqah, and sadaqah in the sense here is those obligatory sadaqah, the zakat, that will purify them and that will cleanse them and raise their level. The zakat, the interesting thing about the word zakat is that it has a meaning of purification. It helps purify our wealth. It helps purify our hearts from greed and attachment to the dunya. It helps improve the communal status, where when those that have share with those that don't have, then everyone benefits. Those that have benefit from a spiritual sense, and those that do not have benefit from a physical sense, and it builds the bonds of love and muhabbah amongst the people. And so when we give with that intention that we are seeking Allah subhanahu wa ta'ala's reward, His pleasure. We're seeking the tremendous bounties that have been promised. The Prophet ﷺ described that a person will be in the shade of their charity on the Day of Judgment. They will be protected when the sun is very near our heads. And may Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for all of us, that very difficult time. A person will find shade in the charity that they had given. It helps repel sickness. It helps repel calamities. It's a proof of a person's iman. As-sadaqatu burhan. This charity is a proof of a person's iman. Because a person can say that I believe. And a person can say that, okay, I'll pray, but don't touch my money. But a person that truly believes in Allah subhanahu wa ta'ala and believes in the promise that Allah subhanahu wa ta'ala has given. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, and he took an oath on this, he swore. He said that مَا نَقَصَتْ مَالٌ مِّن صَدَقَةٍ, that wealth will not decrease by giving in charity. That a person will be charity will be returned to them in terms of barakah, in terms of just the amount itself, or multiplied back given to them. And you see that in many people's stories where a person started to give more and their wealth increased. And their wealth increased, their problems became better. This was all a barakah of their giving in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. And on the other hand, there are warnings as well. In our deen we find both glad tidings, encouragement, and then there's also warnings that a person who hoards and does not give zakat in the proper manner, they do not do the calculations, they're negligent, they hold back, they don't give to the right people, they're stingy about that, or they're just careless, then Allah subhanahu wa ta'ala warns that let them not think that they will be saved. That يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. That when they show up on the Day of Judgment, their wealth that they used to find so dear and near to them will now be melted and used to brand them. And this is a very graphic description that wealth will come to haunt a person on the Day of Judgment. So when we're giving that wealth in terms of zakat, we're purifying ourselves, and we're earning the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, and we're protecting ourselves from that sort of situation on the Day of Judgment. Now, one common, there's probably many misconceptions about zakat, as Brother Ihtisham was mentioning earlier, that you can give whatever you want, and we mentioned that there are specific rules, and I don't know if I have time to get into all of those rules, so yes, that's why Please go ahead. Sorry. Please go ahead. So when it comes to zakat, this, to start off, a person has to be a person of nisab, and nisab is the minimum level that a person has to have in order to be required to pay zakat, and it's calculated whether based off of the gold standard or the silver standard. There's two ways to calculate the nisab. So depending on where a person is living, they should consult with their local scholars as to figure out what that level is.
in the States here, it's calculated, I think, currently at about $6,300, where if a person has that much wealth, then if they, after deducting their expenses, after taking their care of their needs, if a person has that much wealth left over, and then you combine, your cash in your accounts, any gold that you have, any silver that you have, all of those things, if they add up to that amount, and you have that for 1 year, then Okay. after the year has passed, then you look, are you still above the nisab or not? And in most cases, people are, if they have a steady income, they have a steady situation, then usually they're, if they were above, they kind of stay above. Or if they may have gone a little down, but at the end of the year, if they're still above, then you take everything that you have and you calculate 2.5% on that, and that you have to give to the poor, to the venues of zakat, the avenues of zakat. And then there's a lot of detail into what is considered zakatable, what is considered not requiring zakat, so we won't have time to get into all of that. But the Right. general concept for most of these cases is 2.5%. And then there's categories for agriculture, there's categories for livestock, there's categories for other things. There's a lot of detail with regards to that. राइट अच्छा But मुनीब साहब एक yeah, क्वेश्चन है मेरा भी कि ज़कात देना किसको है ये तो मालूम है कि जो नीडी है जो मुस्तहक है उसको आप ज़कात देंगे लेकिन कुछ ऐसा भी है कि ज़कात किसी एक कम्युनिटी को आप नहीं दे सकते कि जिनका ताल्लुक नस्ली तौर पे यानी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ल से है कोई अगर तो उसको ज़कात ही इज नॉट डिजर्विंग फॉर ज़कात इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए आप yeah. So the family of the Prophet ﷺ and his descendants do not receive zakat, and the Prophet ﷺ said that we do not receive zakat, we cannot take zakat. So for those people are often in our culture, we call them sayyids. They are not to be given zakat. That doesn't mean that we can't help them in other ways. So राइट zakat is again referring to the obligatory charity, but voluntary, charity, other forms of help can be given to anybody that's in need. When it comes to zakat, it has to be given to certain people. It has to be a Muslim, has to be a deserving poor person, cannot be a sayyid, as was mentioned. But when it comes to general charity, that can be given to even non-Muslims, and that can be given to all types of people, right? You can always give in a good cause. Outside of zakat, you can always give in any cause that is worthy of giving, right? That is beneficial, that is not going to cause harm to society, that is going to benefit people. Then you can always give that, and that will be rewarded with Allah subhanahu wa ta'ala if done with the right intentions. will you specify you just mentioned that it can be given to non-Muslims too Not zakat. So not oh, zakat. Again. okay Yeah. So I don't want to be misheard. Zakat yes cannot be given to non-Muslims. Yeah, I let's see. make that very clear. Zakat cannot be given to non-Muslims. Other voluntary, nafli, extra giving, you can give to help Anyone. anybody. Yeah. Okay But not zakat. And not yeah sadaqatul fitr, and not any sort of zakat that's any charity that's obligatory in our deen. and how about the importance of sadaqatul fitr कब देना Yes, so चाहिए देना चाहिए किसको देना चाहिए yeah. So sadaqatul fitr is a special sadaqah that is given in Ramadan, and that is given on behalf of everyone in a person's family. So all of their dependents, a person, the head of the household, gives on behalf of everyone in the family, even the little kids. A person gives zakat, that sadaqatul fitr on their behalf to the poor, and it has two primary objectives. One is to make up for mistakes, errors, shortcomings in our Ramadan in terms of our fasting. Maybe we were a little negligent here and there. Maybe we said something we shouldn't have said. Maybe we were not as observant with regards to our fast and the etiquettes of the fast. So this helps make up for that. So giving charity helps make up for that. That is one purpose of Sadaqatul Fitr. And the other obvious purpose is to help ensure that the entire community can celebrate in
the Eid, can be a part of the Eid celebration, so they don't feel left out. And that's why it's specific to Ramadan. Whereas zakat in general is given to the poor throughout the year. It's not tied to Ramadan. Right. Though a lot of people have this concept that zakat is only given in Ramadan. That's also false. Yeah. Zakat has to be given when it's due. And a person's zakat date will vary based on when they started to earn money, when they acquired a certain amount of wealth, whenever that date was. And it's the date goes by the Hijri calendar, the lunar calendar. So whether it was in Sha'ban, whether it was in Ramadan, whether it was in Muharram, whenever a person became required to give zakat, that's when they should be giving it. They should not hold it until Ramadan and I'm going to give it in the future in Ramadan. Because Oh, it's the right of the poor. It has to be given as soon as it is obligatory. Yes, a person can prepay, can give in advance. Like let's say their zakat is going to be due in Shawwal, but they're in Ramadan. They want to give charity now. That's fine. You keep track of what you've given, and then when Shawwal comes, that day in Shawwal, let's say whatever, 10th of Shawwal, then you calculate, this is what my obligation for this year was, this is how much I've already paid, this is what remains, and then make sure to settle it and pay it fully. But a person should not be giving zakat only in Ramadan if their zakat day is outside of Ramadan. Whereas Sadaqatul Fitr is given during Ramadan or before the prayer of Eid, ideally, so that it can get to the poor. And now, since we give to organizations, sometimes it takes longer. So you should give earlier, so the organizations can get it to individuals. Unless you know someone who you can give directly, then you can give them, right. till the time of Eid. If a person misses and does not pay in time of Eid, they should still pay it afterwards. Okay. It shouldn't be that okay, I didn't pay, so I don't have to pay anymore. It still remains on a person. But ideally, it should be given earlier so that the people that receive it can get it in Celebrate it. time for Eid. Okay. Yes. One more question. ये क्या वजह है? इसके बाद मैं आता हूँ तारिक मलहान साहब से भी. और if you have little more time, stay with us. Maybe Tariq Malhance has some question for you. ये क्या वजह है कि जितने भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रमज़ान में ही ज़कात मांगते हैं, और हम भी अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको हम कहते हैं कि रमज़ान है ज़कात निकालो. कोई उसका फ़ायदा ज़्यादा है या नॉर्मली जब भी दें तो एक ही फ़ायदा है, एक ही बेनिफिट है? क्या कहेंगे इसके बारे में? In general, like Muslims are more inclined to worship during Ramadan, and Muslims are more charitable. The Prophet ﷺ himself was a lot more charitable in Ramadan. And he's described as being like very generous, and during Ramadan he was like the blowing wind. Like his generosity even exceeded his normal levels. So generally, Muslims are very generous in Ramadan. And a lot of people then, like to give, because the rewards are also multiplied in Ramadan of any act of worship. A fard becomes like 70 fards, and a nafil becomes like a fard. So a person wants to maximize the reward and do their financial contribution in Ramadan, and so on. So that is where that concept, I think, comes from, where a lot of organizations will also come to Muslims, in general in Ramadan, because everyone's in that mood and they want to give, and so this is a good opportunity to present your organization, to present your campaign, and people will contribute. But that doesn't mean that the obligation is only in Ramadan. The obligation is whenever the time came. Now, a person, again, like one way a person can try to combine with Ramadan and helping is you could, pay some of it or prepay some of it in Ramadan if your date is outside of Ramadan. But a person should not delay their zakat, because then a person is becoming sinful. And you're trying to receive some reward, but in the process you're becoming sinful. That's not a good strategy. And then ultimately you're depriving the poor of their right. So that's also something to be mindful of. I have a question on this one. Yes, please go ahead. Can I ask? Yeah, okay. Yes. Thank you. If you calculate on any certain date, whatever the date is, you calculate your zakat. You don't have to distribute all of that immediately. You can spread that over 1 year period. Can you? So you should
calculate it properly and separate that amount away, it should be given as soon as possible. Now, there are certain cases where a person could spread it out. Let's say you're helping someone who is not very responsible. So if you give them lump sum, the money might go to waste. But if you give them on a monthly basis, they're able to use it for their needs. Like in certain cases like that, a person could spread it out. But in general, a person should not delay the giving of charity just because it'll be better for my income flow that I'm getting this much. I make this much. I'm going to give this much in zakat every month, and that way I'm going to pay it off for the whole year. This should be something that a person you can set that up in terms of prepaying. So for the next year, I expect my zakat will be X amount, so I'll spread it out over these 12 months, so I don't have to pay lump sum at the end of the year. And that's when it will be due. By then, I will have distributed most of it already. So that is one strategy a person could do. When in our mosques, when we collect the zakat, we distribute over time because people are coming every day, every month, every week. So now if we collect a lot, maybe 90% of the zakat in Ramadan, but we cannot spend 90% in Ramadan because now we have nothing left for the remaining of the year because zakat is part of economic system of Islam. Yes, so you have to have money available during the year. So same way I'm thinking on individual level, if I have calculated, I know I have to pay $10,000. I should keep because I know the needs of some people, maybe over the years, so at least I will have the money. So I should give that way, but must pay within the year. Yeah. So in general, I mean, it's due immediately. Right. But that's the concept, right? It's due immediately. Now, when is it practical to give? That might be a practical consideration. Right. You might not be able to give it away, all of it right away, but it is due at that point. So it should be something that a person has, calculated, has specified. If a person passes away before all of that is given, their heirs should be aware that this amount was remaining and they should pay it off immediately. So that all has to be in mind, right? Yeah. Thank you. And then the practical, logistical considerations are still there. Yeah. Muneeb Sahab, you are going over time, but if you have time, you can stay. If you are, going away from time, you can let me know that you have to, move. But it is very good, explanations, and my viewers are very, benefit being did. और मैं अपने नाजरीन से ये भी कहूँगा कि कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लीजिए। मुनीब बेग साहब के पास मैंने 20 मिनट लिए थे, लेकिन अभी ज़्यादा हो रहे हैं और हमारे पास थोड़ा सा अभी और टाइम है, हमें ज़कात पे उस पे बात भी करनी है और आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे एजाज बल्खी साहब, चूँकि ये रमज़ान है और वो फूड ड्राइव भी बहुत करते हैं और मॉर्चरी में भी बहुत एक्टिव रहते हैं, तो ये दिन का वक्त उनका बहुत बिजी होता है, तो ही मस्ट बी वेरी बिजी। ही डिड नॉट उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी वक्त कहीं पे भी होऊंगा तो मैं ऑडियो पे भी आ जाऊंगा, लेकिन मैं उनके बारे में बता देता हूं कि एजाज बल्खी साहब बहुत अरसे से ये चैरिटी के लिए काम कर रहे हैं। ही इज़ बेस्ड इन कैलिफोर्निया और फैमिली रिलीफ यूएसए ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी रजिस्टर्ड है और ये देखिए क्या क्या काम करते हैं। फ्यूनरल असिस्टेंस का काम करते हैं। सबसे बड़ा इनका काम जो मैं देखता हूं कि ये जो खास करके जो महाजरीन हैं जो आए हुए हैं सीरिया से, अफगानिस्तान से और दूसरी जगहों से, और वो बेसलेस हैं, उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, उनका अगर मॉर्चरी होती है तो वो उनके पास कोई जरिया नहीं होता है कि वो यहाँ पे एक्सपेंसिव बेयर करें, तो वो ये सब काम करते हैं उनके। और एजुकेशनल सपोर्ट, उनके बच्चों का, विडोज को जो है सपोर्ट करते हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अभी भी वो इसी में लगे हुए हैं पूरे रमज़ान में, और मस्जिदों में वहाँ पे काम करते हैं जाके, और रमज़ान इफ्तार कराते हैं मस्जिदों में, ये अरेंज करते हैं। और ये इनके जो वन कॉल सॉल्यूशन है इनका कि 32391304444, और जेल से भी आप नॉर्थ अमेरिका में जो लोग हैं वो donation@familyreliefUSA.org ये आप उनको दे सकते हैं। इनका काम पाकिस्तान में भी होता है। पाकिस्तान में भी ये बच्चों को कंप्यूटर, और दूसरे उन लोगों को जो नीडी बच्चे हैं, जिनके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके बच्चों को
कंप्यूटर की तालीम वहाँ पे दे रहे हैं, तो आप इनको सदक़ात, फ़ितरात, ज़कात और वैसे भी जो चैरिटी है वो आप उनको दे सकते हैं। मैं चलूँगा तारिक मलहान साहब के पास शिकागो। इन द मीन टाइम तारिक साहब आप अनम्यूट कर दीजिए अपना वो माइक को, और आपसे मुझे पूछना ये है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी, आप मुख्तलिफ आपने बताया बांग्लादेश में बेसिकली आप काम करते हैं, वहाँ पे स्कूल खोल रहे हैं, वहाँ पे वाटर प्रोजेक्ट है आपका, क्लीन वाटर प्रोजेक्ट, वहाँ पे सैनिटेशन का काम करते हैं आप, फूड डिस्ट्रीब्यूशन रमज़ान में कर रहे हैं अभी आप, तो उनको ब्लैंकेट देते हैं आप, और उसके अलावा आप अभी आपने तुर्किया में भी जलजले वालों के लिए भी हेल्प की है, आपने पाकिस्तान में भी सैलाब ज़दगान की हेल्प की है, तो आप ये कैसे अरेंज करते हैं? इसलिए कि लोगों को कैसे पता चलता है कि ये पैसे वो जो दे रहे हैं अगर तुर्किया के लिए, तो ये बांग्लादेश वाले के प्रोजेक्ट में तो चला नहीं जाता है, तो ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी कि जो जिसके लिए दे रहा है, तो हाउ यू अरेंज इट, ज़रा मुख्तसर बता दीजिए। इज द कॉन्टेक्स्ट ट्रू, बट जब पाकिस्तान में हम इद्दी फाउंडेशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन, वो इद्दी वाले जो है जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसमें जो बैग है डालते हैं उसमें फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी का नाम वगैरह होता है। अच्छा, तो जो टर्की में किया है या पाकिस्तान में, तो हमने मेड ग्लोबल, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आई नो द प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन पर्सनली, and they are doing all over the country, they are doing Pakistan, Bangladesh, you know, across the world. तो उनके थ्रू तो उनको हमने डोनेशन दिया है। तो एंड सिमिलरली जो टर्की में भी है, तो वो जो है ज़कात इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ शिकागो, तो वो ज़कात इंटरनेशनल, तो उनके थ्रू है, उनको हमने कैश दिया है, क्योंकि उनके लिए कुछ मतलब है कि डेजिग्नेट करना बड़ा मुश्किल है इतना वसी पैमाने पे, तो वी प्रोवाइडेड द कैश। ओके। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी जो है ना एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज लेस देन 2% बिकॉज वी डोंट हैव एनी, वी आर ऑल नॉन पेड स्टाफ, वॉलंटियर वर्क। राइट, जी मैं जानता हूँ, ये इनके प्रेसिडेंट हैं अहमद करीम जांगड़ा साहब, वो माशाल्लाह बिजनेसमैन हैं और वो मस्जिदों में भी एक्टिव हैं और वो भी वॉलंटियर करते हैं। इसके अलावा नैयर आलम साहब हैं कैलिफोर्निया में, ही इज जनरल सेक्रेटरी एंड ही volunteers, nothing he gets from friends of humanity. उसके अलावा नाइला अहमद हैं यहाँ पे, जवेरिया अहमद हैं और कैप्टन मसूद रजा हैं इन ह्यूस्टन, और इसी तरह से सारे लोग इनके बुखारी हैं वहाँ पे, हकीमुल्लाह बुखारी न्यूयॉर्क में है, तो दे आर स्प्रेडेड ऑल ओवर। इससे पहले कि मुनीब बेग साहब को अब जाना है 5 मिनट में, मैं उनसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं मुनीब बेग साहब से चाहूँगा कि वो बताएं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बांग्लादेश में काम करती हैं, ओबैट हेल्पर्स हैं, एफपीओ है, ये फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी काम करती है, उसके अलावा इकना, इसना, ये फैमिली रिलीफ यूएसए, ये सारे, तो इनके लिए आप क्या कहेंगे? और पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको लोग देते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि इनको ज़कात, सदक़ात, फ़ितरात वगैरह जो देते हैं, तो उसका जो है सही है, ठीक है, आप मुनासिब समझते हैं इसको, क्या कहेंगे आप? So एक general, there's a general principle and then there's specific organizations. So in terms of general principles, I would say that, if an organization is collecting zakat, as all of the organizations do today, pretty much any organization under the sun will say that they are zakat eligible. It's important to just identify that where is that zakat being spent? Is it going to one of those categories of the poor? And how is it being spent? Is it going on administrative expenses? As Brother Tariq mentioned, that their administrative expenses are very low. That's important to know. There are some organizations that will say very prominently that they have 100% zakat policy, that any amount that is received for zakat, they will not spend on any other costs, any other expenses, or any other projects. They will give it directly to zakat recipients. So it's important to be an intelligent consumer, as we say in America, that you need to be able to ask the organizations or seek out their policies as to how they give zakat, what their policy on zakat spending is,
do they lump all of the charity they receive in one bucket and just give it out, or do they separate zakat and deal with it differently than others? So I think that is one important thing. And if an organization is transparent about that, then that is very helpful. That is very important. If they have religious scholars also overseeing them, in Pakistan, I've seen where there's a lot of organizations that now have this Sharia advisory board, or they'll get a certification by some organization that is reviewing their procedures, policies, methods, gives them a certificate. So that helps in giving a person confidence that this is being monitored and observed. Ultimately, the organization is a wakil, is an agent on your behalf. Right. But giving to the organization itself is not giving to the poor until it reaches the poor. So Exactly. we are Yes. responsible for doing our proper due diligence when giving to an organization, and then, you know, we do our best, and then we leave it in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala and hope that they did fulfill what they had said they are doing, right? But Thank you. ultimately, that is the responsibility of us. It's Sham bhai, Jazakallah I khair. just want to add, it's Sham sahab, Yes. I जी just want to add कि in addition to जो हमने बताया दूसरे बांग्लादेश, Pakistan, Turkey, we also do in America. जब जहाँ right. सर्दी Yes, में I पड़ती है, mentioned we it do. before. Yes. Yeah. And Yeah. then as for Rohingya Mahajirin के लिए, we provide them the Right. blankets. So we do, Yes. I mean, less local level Yes. here, but we do all across. So. राइट जज़ाकल्लाह खैर। मुनीब बेग साहब, आपका टाइम मैंने आपसे जितना कहा था उससे ज़्यादा टाइम ले लिया, लेकिन अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। और मैं आपको टाइम टू टाइम आपको मैं ज़हमत दूंगा, इसलिए कि हमारा जो यंग जनरेशन है उसका बहुत डिमांड था हमारे से। हमारे बच्चे भी, मेरे बच्चे भी, वो कहते थे आपका प्रोग्राम मैं क्या देखूं, मुझे समझ में नहीं आता है। तो आज उनका जो डिमांड है वो फुलफिल हो गया कि यू आर ए यंग मुस्लिम स्कॉलर and you talked in their language so they can understand। और हम सब लोग समझते हैं इंग्लिश, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, और अभी आपके व्यूअर्स में पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, और यहाँ नॉर्थ अमेरिका में हर जगह से, लंदन से भी लोग देख रहे हैं, यूरोप में भी देख रहे हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर, आपको फिर मैं ज़हमत दूंगा। और अभी हम चंद मिनट और ठहरेंगे, तारिक मल्हान साहब से भी बातें करेंगे और हम आपको भी बताएंगे कुछ नाजरीन। तो मुनीब बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। फिर बात अल्लाह ताला होगी। कबूल करे और सबको आमीन अमल करने आमीन की तौफीक दे। आमीन। आमीन। नाजरीन, मैं अभी ये प्रोग्राम हो रहा है आज रमज़ान के आखिरी अशरे के हिसाब से प्रोग्राम हो रहा है, और हम गुफ्तगू कर रहे थे मुनीब बेग साहब से, जो आईटी स्पेशलिस्ट हैं मैं कहूँगा, और वो सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हैं, और वो मुस्लिम स्कॉलर भी हैं। उन्होंने अपनी जो बेसिक तालीम है उसके बाद वो वहाँ दारुल उलूम कोरंगी गए थे, यहाँ अमेरिका से। यहाँ के हैं, यहाँ के रेज्ड हैं, 6 साल वहाँ से आलिम का कोर्स किया उन्होंने, और अब आपके सामने है जो बातें हैं, और हमने ज़रूरी समझा। असफर इमाम साहब हमारे मीडिया पर्सन हैं और वाशिंगटन डीसी में हैं। उन्होंने कहा है, मैं उसकी वजाहत कर दूं इसलिए कि मैं तारिक मल्हान साहब से बात कर चुका हूं उससे पहले। उन्होंने कहा था कि आप खुद जब चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, आप फलाही काम कर रहे हैं, तो ईदी की मदद की क्या ज़रूरत पड़ी है। तो उसमें ये था कि चूँकि ये ऑर्गेनाइजेशन हर जगह रजिस्टर्ड नहीं है, और कानून के मुताबिक आप किसी भी मुल्क में जाके इस तरह काम नहीं कर सकते अगर आप वहाँ रजिस्टर्ड नहीं हैं। तो टर्की में, यानी तुर्किया में, अब तो तुर्किया हो गया वो, तुर्किया में और पाकिस्तान में फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसको किसी न किसी के वसीले से जाके वहाँ काम करना था। तो इनके बैनर तले अरेंजमेंट जो किया था वो ईदी फाउंडेशन ने किया था, और तुर्किया में कोई और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उसने किया था। तो ये एक तरीका है, आपको मालूम है असफर इमाम साहब, आप तो बहरहाल, लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल किया ताकि लोगों के जहन में ये बात आ जाए। मुमताज़ खान साहब भी बहुत यहाँ पे हमारे व्यूअर हैं, बहुत अच्छे व्यूअर हैं। वो भी कह रहे हैं कि ज़कात ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं, क्या उनकी तनख्वाहों से निकाल के पैसों से दी जा सकती है, ज़कात के पैसों से दी जा सकती है। ये एक सवाल है, मैं देर से देखा, वरना मैं उनसे, मौलाना मुनीब से ज़रूर पूछता, और मैं मुमताज़ साहब इसको आपको ज़रूर इसका जवाब भिजवाऊंगा और इसके बारे में हम पता करेंगे।
کہ श्याम भाई मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ज़कात जो डिस्ट्रीब्यूशन में भी होते हैं उनको तनख्वाह दी जा सकती है जो जी ऑर्गेनाइजेशन है जी तो हाँ बिल्कुल। वो असल में बात ये होती है कि वो ये एक्सपेंसेस में आता है कि अगर आप फर्ज कीजिए कि स्कूल चला रहे हैं, फ्री स्कूल चला रहे हैं मुस्तहिकीन के लिए, गरीबों के लिए, तो उनको वहाँ पे टीचर्स भी प्रोवाइड करना आपकी जिम्मेदारी है। तो आप अपनी जेब से या किसी और की जेब से, मुमताज़ साहब की जेब से लेके तो नहीं दे सकते, आपके पास जो फंड है उसी में से देंगे। तो वो जो आप फलाही काम कर रहे हैं ज़कात के पैसे से, वो उन्हीं एक्सपेंसेस में आता है कि जैसे आप स्कूल का किराया दे रहे हैं बिल्डिंग का, या टीचर्स की तनख्वाह दे रहे हैं, या आप पानी का इंतज़ाम वहाँ कर रहे हैं, यूटिलिटी बिल्स पे कर रहे हैं, तो वो ज़ाहिर है कि उसी फंड में से दिया जाएगा। तो हम ज़ाहिर है मालूम भी कर चुके हैं, इससे पहले आप पता कर चुके हैं, और जब भी ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, वो इन चीज़ों का ख्याल रखती हैं कि कोई ऐसी गलती ना हो जो उनके कंधे पे वो वबाल आ जाए। तो मैं अब पूछूंगा तारिक मलहान साहब से कि आपका मज़ीद इस सिलसिले में क्या प्लान है फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी का, कि आप फर्दर बांग्लादेश के कैंप्स के लोगों के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं, क्या एक्सपेंड करने जा रहे हैं, या क्या है जो आप बताइए लोगों को, ताकि आपके जो इसमें डोनर्स भी हैं और नहीं है अगर डोनर्स तो वो होने का सोच भी सकते हैं। तो आप बताइए कुछ इस बारे में। देखें प्रोग्राम तो बहुत किए जा सकते हैं, वो अंग्रेजी में कहते हैं मनी मेक्स मेयर गो। अब ये है कि धेला धेला पैसा रुपया इकट्ठा करना भी इट्स नॉट दैट इजी। तो मतलब है कि हमारे माशाल्लाह बड़े लोग चैरिटेबल हैं, बहुत डोनेशंस देते हैं, लेकिन चैरिटी भी डिमांड भी इतनी है, और उसके बाद जो एजेंसीज हैं नॉन फॉर प्रॉफिट वो भी बहुत ज़्यादा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड रिसोर्सेज। अब हमारा जो मेन बजट है वो स्कूल का बजट है। अच्छा, हाँ जी, स्कूल का बजट है। बाकी प्रोजेक्ट हमें एज दे कम वी आस्क वी रिक्वेस्ट, हालांकि तो ये तो सारी सर्विसेज के लिए है पैसा, बट वी ट्राई टू मेक श्योर कि स्कूल इज नॉट अफेक्टेड, क्योंकि अगर फंड्स कम हो गए तो लिहाजा इट्स ए स्ट्रगल। अगर हमारे पास मतलब अल्लाह करे ज़्यादा डोनेशन आने शुरू हो जाए तो हमारी एक ख्वाहिश है कि हम कोई मेडिकली कुछ वहाँ कुछ डिस्पेंसरी वगैरह खोल दें। अच्छा, ठीक है, अगर मौका लगे तो कॉलेज तक भी खोल दें। अभी तो ये वी वांट टू डू इट, लेकिन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, डिमांड्स आर लॉट, रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड। तो या ठीक है। अच्छा, यही तो मैं इसीलिए मैं नाजरीन को कहूँगा कि ये इनका फ्लायर है, आप देख लीजिए, इसमें ये क्या काम करते हैं, आप किस तरह डोनेशन भेज सकते हैं इसको, इसमें भी सारी चीज़ें हैं। अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो आप जेल के थ्रू दे सकते हैं, कोई फीस नहीं लगती है, पेपाल के थ्रू दे सकते हैं, आप चेक भेज सकते हैं अपना, इसमें इनके PO बॉक्स नंबर भी पड़े हुए हैं, और ये सारी चीज़ें हैं, ये मैं दिखा देता हूँ। और उसके अलावा जो हमारे जो फैमिली रिलीफ USA एजाज बल्खी साहब हैं, उनके बारे में मैंने बता दिया है कि आप अमेरिका में अगर रहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में, तो आप इनको ज़रूर, इनको भी मदद कीजिए। ये बहुत अपने आप को इन्होंने वक्फ किया हुआ है मुस्तहिकीन के लिए, गरीबों के लिए, ख़ास करके उन मुसलमानों के लिए जो महाजरीन हैं, जो मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए हैं, उनके एक एक मसले को ये सारा दिन हल करते हैं। मैं इनसे वाकिफ़ हूँ। ये वैसे भी ये बहुत ही जनरस आदमी हैं। ये FOH के टीम को भी हेल्प करते हैं IT के हवाले से, ये और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, हम और आपकी टीम में ये शामिल हैं, और हम आपकी जो ये सारे आप देखते हैं फ्लायर और ये सारी चीज़ें, ये सारे हेल्प करते हैं। तो ये ही इज़ हेल्पिंग पर्सन, तो इनके भी आप हेल्प कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। और हमारे नाज़रीन को मैं ये बताता चलूँ कि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो आपको पता है कि बुध के दिन दिसंबर के महीने में या मार्च और अप्रैल में हमारा होता है ईस्ट पाकिस्तान ट्रेजिडी 1971 हिस्ट्री रिविजिटेड का। वो हमने मार्च में और अप्रैल में भी किया है, और अब आखिरी प्रोग्राम हमारा 19 जुलाई को बुध के दिन है, 19 अप्रैल को। उसको आप देखना ना भूलिएगा। उसमें हम 2 आई विटनेसेस को लाएंगे, और तारीख को के उन औराक को हम सामने लाते हैं जो औराक लोगों की नज़रों से ओझल हैं, उनको बताया कुछ और जाता है, हुआ कुछ और है। तो ये प्रोग्राम आप ज़रूर देखिएगा।
اگلے سیٹرڈے کا جو پروگرام ہے وہ ہم آپ سے چھٹی لے رہے ہیں. آج آپ اپروو کر دیجئے ہمارے ناظرین کہ میری چھٹی کر دیجئے، اس لیے کہ چھٹی ہمیشہ کے لیے مت کیجیے گا، سیٹرڈے کو چھٹی دے دیجئے ہمیں، اس لیے کہ عید ہو سکتی ہے اور یا عید کا دوسرا دن ہو سکتا ہے، تو ہم اس دن آپ کو ڈسٹرب بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ اپنا وقت نکال کے آتے ہیں. میں جانتا ہوں، نام نہیں لینا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ آج پروگرام کیوں نہیں ہو رہا ہے یا کیا ہے. لیکن اگلے سیٹرڈے کو ہمارا پروگرام نہیں ہوگا، عید کا دن ہوگا یا عید کا دوسرا دن ہوگا. اور لیکن یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اپریل کے مہینے میں 3 سال پہلے پروگرام ہم اور آپ شروع ہوا تھا، اور 1 ہفتے ناغہ کے بغیر یہ پروگرام جاری و ساری ہے. تو 29 تاریخ کو سیٹرڈے ہے اپریل کو، ہم آپ کے ساتھ عید بھی منائیں گے اس پروگرام میں، اور اس ہم اور آپ کی سالگرہ بھی منائیں گے. تو ہمارا 2 اگلا پروگرام آپ دیکھنا نہ بھولیے گا. بدھ کا 19 اپریل کا ہسٹری ریوزٹڈ ایسٹ پاکستان ٹریجڈی 1971، اور 29 اپریل سیٹرڈے کو آپ سالگرہ ہم اور آپ کی، اور عید بھی ہم منائیں گے آپ کے ساتھ. لیکن جاتے جاتے طارق ملحان صاحب سے کہوں گا کہ آپ کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے ویورز کو، کچھ کہنا چاہیں ان سے، پلیز آپ کہیے. اب یہ آخری لمحات ہیں ہمارے آج کے پروگرام کے، رمضان کے. آپ سب لوگوں کو رمضان مبارک ہو، اور آنے والی عید بھی مبارک ہو. ہم آفیشیلی تو آپ کو 29 تاریخ کو عید کی مبارکباد دیں گے. جی طارق ملحان صاحب. پیغام تو یہی ہے کہ جی ماشاءاللہ رمضان گزر رہا ہے، تو اللہ میاں صاحب کو مبارک کرے، اور عید آ رہی ہے تو ان ایڈوانس عید مبارک. اور یہ ہے کہ ہماری آپ مدد کرتے رہیں فائنینشلی، تو وی ول کیپ آن ایکسپینڈنگ دی ہیومینیٹیرین ورک. جہاں زیادہ کر سکے انشاءاللہ وی ول ڈو اٹ. تو آپ کی مدد کے بغیر ایسے پروگرام نہیں چل سکتے، آپ کے ڈونیشنز کے بغیر. تھینک یو، جزاک اللہ. جو بھی آپ نے اب تک کیا ہے تو ہم اس کے شکر گزار ہیں. لیجیے جناب، مجھے چھٹی گرانٹ ہو گئی ہے. نیار عالم صاحب نے نیابت کر دی ہے تمام ویورز کی طرف سے، اور میں اسی کے ساتھ ساتھ، اور ممتاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا شیر خورما بھی لائیں گے. جی آن لائن ہم سب کو ساری خدمت کریں گے آپ کی ممتاز صاحب. تو میں اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہوں گا. میں آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارے لیے، ہمارے ویورز کے لیے، ہمارے تمام مہمانوں کے لیے جو آتے رہے ہیں 3 برسوں میں، آپ ان کے لیے دعا کیجیے. اور ان جو آرگنائزیشنز ہیں جو انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں، جن کا میں نے خاص طور سے ذکر کیا ہے، فرینڈز آف ہیومینٹی اور فیملی ریلیف USA، اس کے علاوہ بھی ہیں اوبیٹ ہیلپرز ہیں، FPO ہیں، اکنا ہے، ہیلپنگ ہینڈز ہیں، یہ سارے ہدایہ فاؤنڈیشن ہے، یہ سب کام کرتے ہیں انسانیت کے لیے. تو ان سب کے لیے آپ ضرور اپنے دامن وسیع کر دیں، اپنے ہاتھ کھلے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح دینے والا بنائے. میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. السلام علیکم. خدا حافظ.